Good morning, students. Let us describe about urinary elimination. So, first the anatomical review the urinary system. You know that about that urinary system that it consists of the kidney, ureter, bladder, urethra, and that is urethral meatus. Okay. So the main function of kidney to remove the waste product and excess water. Okay. So in the kidney, the waste product, excess waters and other substances enter to the renal artery, and that excess water, waste product, toxic substance removed via through the renal vein, and at last through the urethra, that excess water and the other toxic substance as eliminated through the or via the urine. So kidney रो मेन फंक्शन है जे एक्सेस वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक सब्सटेंस जहाँ भी थी ताकू कौन बाहर कर ताकू रिमूव करिबारे सहायता करे। यह यूरिन माध्यम बाहरी जाई थाए यूरेथ्रा द्वारा। तो किडनी रे कौन हुए द रेनल आर्टेरी कौन करे ना रेनल आर्टेरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाटर and other substances excess water also enter to the renal artery excess water हो किसी substance other substance हो toxin जहाँ भी blood waste product सब blood excess water substances सब renal artery मध्य एंट्री करते हैं। रेनाल वेन माध्यम एक्सेस वाटर टॉक्सिक सब्सटेंस सब गुड़ाक किडनी लीव होता है से गुड़ाक थ्रू भाया द urethra that will extracted through by the urine माध्यम कौन है से टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सेस वाटर सब बाहरी जाई थाए। यूरेटर काम कौन यूरेटर that will be carry the urine from the kidney to the urinary bladder. Okay, then bladder is main function storage the urine, and urethra the main function urethra is the to extracted urine or remove the urine from the bladder to the outside through the meatus. Okay, so this is a urinary system. Then so first we will describe the definition of the elimination. So what is elimination? Elimination is the expulsion of waste product from the body through the skin, lungs, kidney and rectum. So through the skin that the waste product also removed, that is through by the example of the sweating. Through the lungs also the waste product will be removed. How? Now when food is converted to energy at that time cells make the carbon dioxide. That carbon dioxide will be removed, that will be goes outside. Okay, and it will be done through by the inhale and exhale during the inhalation and exhalations, and through the kidney the waste product excess water will be removed, and through the rectum feces will be excreted. So elimination is a process through by which the waste product will be removed through by the kidney, lungs, skin and rectum. तो ये स्किन लंग्स किडनी और रेक्टम माध्यम कौन हुए ना आम वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस वाटर गुड़ाक बॉडी रू बाहरी था एलिमिनेशन कह जाए। ओके, अच्छा यूरिनरी एलिमिनेशन कौन रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू बाय द यूरिनरी सिस्टम। यूरिन सिस्टम माध्यम कौन हुए ना यूरिन द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ाक बॉडी रू रिमूव होगा को यूरिनरी एलिमिनेशन कहते। ओके, सो देन रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन एलिमिनेशन. How urine will be expulsion occurs of the urine, and urine will be eliminated from the body. The first, when urine is collected in the urinary bladder, and that will be comes from the kidney through by the ureter. At that time the person has feeling that the person has the desire to void. Okay, and that is that occurs through by the stimulation of stage receptors. से कौन हुए ना जो यूरिन कौन हुए ना ब्लाडर रे कलेक्शन हो स्टोर हो गला से समय कौन हुए व्यक्ति कौन करे तार गोटे एक्सपीरियंस आसे से कौन हुए से इच्छा करे जे यूरिन को
एलिमिनेशन करने यह केमी संभव होता है जेहेतु ब्लाडर जो स्टेज रिसेप्टर अच्छा से गुड़ाक स्टिमुलेसन हवा द्वारा यही प्रोसेस होता है व्यक्ति निजे यूरिनेशन करने इच्छा प्रकाश करे ओके यूरिनेशन करने इच्छा प्रकाश करे से कौन हुए ना स्टेज रिसेप्टर गुड़ाक जो अच्छा से स्टिमुलेसन होगापर यही प्रोसेस होता है ओके केतबेले हुए व्हेन द ब्लाडर फिल विथ अबाउट द 250 to 450 ml ऑफ यूरिन इन अडल्ट एंड इन केस चिल्ड्रेन 50 to 200 ml ऑफ यूरिन जिते गोटे अडल्ट व्यक्ति रे कौन हुए ना यूरिन अमाउंट 250 to 450 स्टोर होकर रही जाए यूरिन ब्लाडर से व्यक्ति कौन व्यक्ति सेंसन हुए ब्लाडर सेंसेसन हुए डिजायर टू भॉइड करने कि जदि चिल्ड्रेन केस 50 to 200 ml ऑफ यूरिन जदि ब्लाडर स्टोर होगा से व्यक्ति भॉइड करने ट्राए करे से व्यक्तिर डिजायर टू भॉइड होता है से यूरिनेशन होगापी जेहेतु स्टेज रिसेप्टर गुड़ाक अच्छा से गुड़ाक स्टिमुलेसन होती तो व्यक्ति कौन करे ना भॉइड करने यूरिनेशन करने इच्छा करे ओके In this case what happen now the stage receptors present in the bladder that will transmit the message to the body receptor present in the spinal cord in the second and fourth sacral vertebra. So spinal cord रे कौन रही जो सेकेंड फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा अच्छी सेठी कौन हुए ना स्टेज रिसेप्टर गुड़ाक सब कौन करते ना भॉइडिंग रिफ्लेक्स मेसेज गुड़ाक सब ट्रांसमिट करते तापर कौन हुए ना ब्रेन एटा खबर दिस मेसेज विल बी आल्सो बी गोज टू द ब्रेन देन ब्रेन सेंड मेसेज थ्रू बाय द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्लैडर टू स्टिमुलेशन टू द यूरिन कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लैडर ओके at the time when the message from the brain will be come to the bladder then bladder muscles will be relaxation okay and the urine will be released from the bladder and it is the appropriate time and place where the external sphincters reflexes occurs and urination process take place. At the time there is a two sphincters that is internal urethra in the urethra that is two sphincter between the bladder and urethra that is the internal urethral sphincter and external urethral sphincter. The internal urethral sphincter that regulate involuntarily control of urine flow from bladder to urethra. जो आम जो यूरिन फ्लो होची से इनवॉल्युंटरी कंट्रोल को रेगुलेट करने ब्लाडर यूरेथ्रा को इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर काम करें जो कौन हुए ना ब्लाडर यूरेथ्रा को जो यूरिनटा पास हुए से कौन हुए ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर ताको रेगुलेट करे इंटरनल यूरेथ्रल ओपन हुए तापर कौन हुए यूरिनटा ब्लाडर यूरेथ्रा को जाए एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर काम कौन इट इज प्रोवाइड वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन फ्लो फ्रॉम ब्लाडर टू द यूरेथ्रा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर कौन हुए ना सी कहते ना वॉलंटरी कंट्रोल भाव में इच्छा थाई कि कौन हुए ना यूरिनटा को ब्लाडर यूरेथ्रा को पास करे थांदी तो दीटा स्पिंचर थाई गोटे इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर दैट टू यूरेथ्रल स्पिंचर सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द ब्लाडर टू द यूरेथ्रा और रिलैक्सेस टू अलाउ पास यूरिन ताले ये कौन हुए ना दीटा स्पिंचर थाए तो गोटे इंटरनल गोटे एक्सटर्नल स्पिंचर कौन करे ना यूरिनटा को ब्लाडर यूरेथ्रा को फ्लो करने इनवॉल्युंटरी कंट्रोल को रेगुलेट करि थाए व्यक्तिर इच्छा न से यूरिनटा ऑटोमेटिक बेले बेले ब्लाडर यूरेथ्रा को जाए that is internal urethral sphincter काम the internal urethral sphincter regulate the involuntary control of urine flow from bladder to urethra but here when the bladder will be store the urine through by the external sphincter that will function is the provide voluntary control of urine flow from bladder to the urethra को voluntary control हिसाब रे माने जेतले व्यक्ति voluntary control हिसाब रे जेतले desire to urge to void कर इच्छा हो से यूरिनेशन करने जो एक्सटर्नल स्पिंचर माध्यम कौन हुए ना यूरिनेशन होता है तो आउ थे कही रखुच्छी केमी यूरिन एलिमिनेशन होची ओके साधारणतः यूरिन
urine that is pass away from the kidney to the bladder through by the ureter. यूरेटर माध्यम कौन हुए किडनी रू ब्लाडर को यूरिन गुड़िक आसी था यूरिनरी ब्लाडर रे ता स्टोर हो रही था जिते कौन हुए ना द स्टेज रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्लाडर द स्टेज रिसेप्टर स्टिमुलेटेड देन द पर्सन विल बी गो डिजायर टू भॉइड जिते कौन हुए ना स्टेज रिसेप्टर गुटा स्टिमुलेसन होता से व्यक्ति कौन करे इच्छा करे जे यूरिनेशन करने ओके ये समय कौन हुए व्हेन द ब्लाडर इज फिल ऑफ द यूरिन अबाउट 250 to 400 ml in case of adult that then the person will be desired to void and the in case of children when the urine will be stored in the about 50 to 200 ml at the time person will be desired to void जिते गोटे adult केस रे 250 ରୁ 450 यूरिन स्टोर हो जाऊँ से व्यक्ति डिजायर कर भॉइड करने कि चिल्ड्रेन केस रे 50 to 200 ml जो यूरिन स्टोर होती भी ब्लाडर स्टोर होती भी व्यक्ति डिजायर टू से व्यक्ति यूरिनेशन करने इच्छा करुच्ची ओके तो से कौन हुए ना केमी व्यक्ति किभली इच्छा करे ना केमी से यूरिनटा रिलीज हुए ना ये समय कौन हुए जो यूरिनटा स्टोर हो जाए ब्लाडर से स्टेज मसल स्टिमुलेशन होता दैट स्टेज रिसेप्टर्स will be send message to the spinal cord to the second and fourth sacral vertebra spinal cord second and fourth sacral vertebra अच्छी सेठी कौन हुए ना स्टेज रिसेप्टर गुड़ाक सब स्टिमुलेशन सेंड करी थांदी then after receiving the when the message will be sent to the brain then brain also send a message through the spinal cord to stimulation of the bladder that causing stimulation of the bladder then the urine can be released from the bladder through by the urethra and through it here also external urethra pincher help to release the urine. The main function of external urethral pincher provide the voluntary control of urine flow from bladder to the urethra. Bladder urethra को urine pass away करने पाई external urethral pincher कौन है ओपनिंग हो जाए ओके तापर यूरिन पास होला से पुणी क्लोज होता है तो वॉलंटरी कंट्रोल माने वॉलंटरी कंट्रोल मीन्स व्यक्ति से जो चाहब से यूरिन ब्लाडर यूरेथ्रा मध्यम यूरिन गुड़ाक आउटसाइड को जाए से कौन है एक्सटर्नल यूरिनरी स्पिंचरटा ओपनिंग होता है ओके then composition of urine composition of what are the constituents of urine consists about 96% of water and 4% solid एथरे केते ना 100 जदि आमे total if you will counted 100% about 96% of water the urine will be consists and solid is about 4% solid will be remain in the urine so total here 96% plus 4% is equal to 100 okay percentage so the 90 or water will be about 96% and solid is about the 4% and also urine composed of the solid that include the organic and inorganic substance in the inorganic substance that is composed of the calcium sodium potassium chloride and in the organic substances that will be consist about the urea uric acid creatinine urates chlorides phosphate etc तो एथरे यूरिन रे बहुत वाटर भाग रही 96% सॉलिड परसेंट रही 4% एथर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रही ऑर्गेनिक भितर आमर यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन एसेट्रा जाउची इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भितर सोडियम पोटासियम क्लोराइड फॉस्फेट्स इत्यादि जाउची ओके देन कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन ओके A healthy adult in 24 hours he or she excreted 1000 to 2000 ml of urine okay and that excretion of urine depends on the intake of water how much water he take according to it urine will be excreted so in the research that will be determined that in 24 hours a healthy adult he or she excreted urine is about 1000 to 2000 ml
and also we seen that output increases in the cold weather and decreases in hot weather. In cold weather output increases, and in hot weather the output also be decreases. Okay, the color, then come to the color. Normal urine color is the pale yellowish color or amber in color. Okay, when the urine amount increases, it is seen as the pale yellow color, and the urine quantity decreases, it is seen as the deep yellow. So ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 to 6 ଲିଟର ୱାଟର ପିଇବା ଉଚିତ ବା ପିଇଥାଏ। ତ ୟୁରିନ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 24 ଆୱାର୍ସରେ ସାଧାରଣତଃ 1000-2000 ml ୟୁରିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ୱାଟର କେତେ ପରିମାଣ ପିଇବା ତାପରେ ୟୁରିନ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରେସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାଯାଇଛି କୋଲ୍ଡ ୱେଦରରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଟ୍ ୱେଦରରେ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ୟୁରିନ୍ର ନର୍ମାଲ୍ କଲର୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ୟୁରିନ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ पेल येलोइश कलर होता है कि अंबर कलर होता है। जिते यूरिन क्वांटिटी अधिका हो जाए से कौन हुए ना यूरिनटा पेल येलो कलर हो जाए, जिते क्वांटिटी डिक्रीज होता है से कलरटा तार डीप येलो हो जाता है। ओके, यदि आम आपेरेन्स कथा को विचार को नवा ताले नॉर्मल यूरिन पूरा क्लियर अटे, जैसे किसी डिपोजिट नो देयर इज नो डिपोजिट एवं तार ऑर्डर होची एरोमेटिक ऑर्डर। ओके, एंड द यूरिन रिएक्शन इज अबाउट द स्लाइटली एसिडिक एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन इज अबाउट 1.016 to 1.025 विथ ए नॉर्मल फ्लूइड इनटेक। ताहले I discuss about the characteristic normal range of the urine. The normal a healthy adult extract the normal amount of urine in the 24 hours is about 1,200 ml. Color is the pale yellowish color, amber in color. If urine quantity increases, that is the pale yellow color, and when the urine quantity decreases, that color becomes deep yellow. And the normal appearance of urine is the very clear, there is no deposit, and order is the very aromatic order, and the normal reaction is the slightly acidic in nature, and the specific gravity of the urine is about 1.016 to 1.025, and the normal urine pH value is about 4.6 to 8. So these are the characteristics of the normal range of the urine. We discuss about the abnormal value of urine. Okay, when the volume of the urine excretion is increases. Okay, so we know that in 24 hours 1000 to 2000 ml of urine will be extracted from the adult body. Okay, so when the urine volume is increased, okay, that is known as polyuria. Okay, abnormal increase of volume of urine known as polyuria. When the urine amount is decreased, that is known as oliguria, and the total absence of urination, that is known as anuria. जितने व्यक्तिर यूरिन वॉल्यूमटा बढ़ी जाए आबनॉर्मली यूरिन इनक्रीज हो जाए ताको पॉलीयूरिया कहती। जिते कौन हुए यूरिन क्वांटिटी कमी जाए ताको ऑलिगुरिया कहती। जिते यूरिन टोटाल तैयारी हुए कि आब्सेंस रही जाए से कहते एन्यूरिया कहती, और जार मार्क्ड यूरिन कहते एन्यूरिया। देन इन द आबनॉर्मल यूरिन रे कलर देखा, तो आबनॉर्मल यूरिन केते हुए ना मेडिकेशन इफेक्ट रही थाए कि कौन सी डिजीज कंडीशन रे आबनॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन होता है। ओके, तो से समय तार वॉल्यूमटा जदि अधिका हो गला ताको पॉलीयूरिया कहती। हमरो बारंबार यूरिनेशन करती डायबिटीज फिटिस केस गुड़ाक। ओके, देन देखिए कलर कौन देखा जदि बाइल सल्ट बा बाइल पिगमेंट रही ब्लड रे तो यूरिन कलर ग्रीन ब्राउन येलो देखा जाए। यदि यूरोबिलिनोजेन थाए ताकि रेडिश ब्राउन कलर हो जाए। यदि किसी ब्लड कौन सी डिजीज को फ्रेश ब्लड प्रेजेंट थाए यूरिन रे ताहा ब्राइट रेड कलर देखा जाए। इफ देयर हैज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड दैट इज द यूरिन कलर इज पिंक कलर, and if देयर हैज a blood pigment that is a smoky brown color. If the person is in a filariasis condition, okay, filariasis is a disease, and that person should undergo the filaria because the presence of the chylorrhea. Okay,
in the cellular conditions, when the persons undergo the cellular condition, when the lymphatic fluid enter into the kidney, the persons under the cellular conditions, and at that time that urine turned into the milk white. तो फाइलेरिस कंडीशन जो कौन हुए ना लिम्फाटिक फ्लूइड गुड़ाक सब किडनी को लिकेज हो जाती से कौन हुए ना यूरिनटा साधारणतः मिल्की व्हाइट कलर देखा जाए था. ओके, देन कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन. कौन सब फैक्टर रही जहाँकि यूरिनरी एलिमिनेशन उपर अफेक्ट पकई थाए. ओके, when in the that is the some factors like the fluid intake, loss of blood fluid, nutrition, body position, psychological factors, etc. First we talk to about the fluid intake. Okay, when the persons take the excess amount of fluid, then the persons goes to the frequency of voiding. Okay, then persons goes to the persons has desire to the more amount of the voiding, urination will be increases. Okay, frequency of urination increases because bladder will fill up the urine very frequently. Okay, similarly when the fluid intake is very low, then the voiding also be decreases, the voiding frequency of voiding decreases. जेतले कौन हुए पर्सन कौन करे नॉर्मल अमाउंट फ्लूइड इनटेक करे और गोटे हेल्दी आइट नॉर्मल अमाउंट फ्लूइड इनटेक हो 4 to 6 लीटर इन डे. If he take more than 4 to 6 liter of water, then what happen, the person's voiding will be increases. person व्यक्ति जब 4 to 6 लीटर अधिक वाटर पीला तो एक्सेस अमाउंट वाटर जो पीला व्यक्ति कौन हुए तार voidingटा माने यूरिनेशन पैटर्नटा अधिका होता है, बारंबार से यूरिनेशन करी थाए. ओके, इवन जो यूरिन फ्लूइड इंटेकटा कमी जाए जिते व्यक्तिर कौन से डिजीज जो किसी इलनेस फिल होता कि डिहाइड्रेशन है से कौन हुए ना फ्लूइड इंटेकटा कमी जाए था. जो फ्लूइड इंटेक कमी जाए से कौन हुए ना व्यक्ति से तार voiding फ्रिक्वेंसीटा कमी जाए. ओके, तो ये जान फ्लूइड इंटेक यूरिनरी एलिमिनेशन उपर अफेक्ट पकई थाए. देन कम टू द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड. द पर्सन्स बॉडी फ्लूइड विल बी लॉस्ट थ्रू बाय द डायरिया, sweating, okay, and the vomiting. So that vomiting, sweating, डायरिया कंडीशन कौन फ्लूइडा बॉडी रू चली जाए थाए जहाँद्वारा कि व्यक्तिर कौन हुए ना व्यक्ति कौन हुए तार बहुत परिमाण फ्लूइड ता बॉडी रू लॉस हो जाए. ओके, तेणु यूरिनरी एलिमिनेशन अफेक्ट पकाए जहाँद्वारा कि तार जी यूरिन बाहर को जावा कथा से जापे ना, बहुत कमी जाए थाए. ओके, से कौन गोटे ना किडनी इनक्रीज द रिअब्जॉर्प्शन प्रोसेस टू मेंटेन देयर द ऑस्मोलारिटी. ओके, से कौन हुए आमर नॉर्मल ऑस्मोलारिटी बॉडी फ्लूइड नॉर्मल ऑस्मोलारिटी केते रहउछि ना 285 टू 295 ऑस्मोलारिटी पर लीटर रोची. इट मेंटेन वाटर इलोडेड बैलेंस. ओके, तो व्यक्तिर बॉडी रे गोटे आमर बॉडी फ्लूइड नॉर्मल ऑस्मोलारिटी होची 285 टू 295 मिली ऑस्मोलारिटी पर लीटर. ओके, एथरे कौन हुए ना बॉडी रो वाटर इलोडेड बैलेंसटा मेंटेन होता है. तो एथरे कौन हुए ना ऑस्मोलारिटी कौन हुए ऑस्मोलारिटी होची कौन ना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. गोटे लीटर सॉल्यूशन रे केते नंबर केते पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल रही ताको आम ऑस्मोलारिटी कही था. ओके, तो गोटे व्यक्तिर बॉडी फ्लूइड रे नॉर्मल ऑस्मोलारिटी होची 285 रु 295 मिली ऑस्मोलारिटी पर लीटर अच्छी एवं एथरे ये वाटर इलोडेड बैलेंस मेंटेन करिबारे साहाय्य करे. जिते व्यक्तिर बॉडी रे कौन है ना फ्लूइड परिमाण कमी जाए थाए डायरिया द्वारा हो वोमिटिंग द्वारा हो से कौन हुए ना किडनी कौन करे तार ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने रिअब्जॉर्प्शन प्रोसेसटा को बढ़ाई थाए. ओके, तो एथुर जानले जे तापर कौन हुए ना आउटपुटटा यूरिन आउटपुट कमी जाए थाए. ओके, देन कम टू द न्यूट्रिशन. इफ we take the high percentage of the food, we take the high calories of food, etc. When you take the high amount of food, high percentage of food, at the time you require the
high content of water. Okay, so when the water content is very high, then the urinary output also be increases. When you take the diuretic and that is example of the alcohol and caffeine, that also increase the urinary output. ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛେ, ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବା ଫାଇବର ଫୁଡ଼୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫୁଡ଼୍ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ୱି ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଫର୍ ଦ ଡାଇଜେସନ୍ସ and for the comfortness. At the time the body requires the most excess water, so we take, so urinary output also be that time increases. If we take the diuretics, okay, alcohol, when you take alcohol and caffeine, that also increase the urinary output. Okay, then come to the body positions. Normally the person goes to voiding at the standing position in case of male, so it is very easy to the urinations. Okay, so in the upright standing positions, the urinary elimination goes onwards in case of men, and some men also find difficult to empty their bladder fully when you are the lying or flat in the bed. ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ଅପରାଇଟ୍, ଯଦି ଆମେ ମେଲ୍ କଥା ବିଚାର ନେବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ୟୁରିନେସନ୍ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଡ଼୍ରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୟୁରିନେସନ୍ ଠିକ୍ରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବଡ଼ି ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁରିନାରୀ ଏଲିମିନେସନ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। when the persons in the stress and anxiety stress, that also affect the urinary eliminations, and persons of psychological thinking also affect the urinary eliminations. ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାବି ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିନେସନ୍ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଙ୍ଜାଇଟି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବି କରୁନି। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସମ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ୱାଟର୍, ଯେତେବେଳେ ୱାଟର୍ ରନିଂ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ହ୍ୱେନ୍ ହି perceive that there is a sudden accidental case, sudden atmospheric changes, sudden loss of anyone, at the time also persons do the urinations. तो साइकोलॉजिकल थिंकिंग द्वारा हो कि स्ट्रेस एंजाइटी द्वारा हो तो व्यक्ति यूरिनेशन करुच्ची। ओके, तो यहाँ हूँ गोटे साइकोलॉजिकल फैक्टर वॉलंटरी कॉन्शियस उपर इफेक्ट पकाउची। से व्यक्ति कौन हो भॉइडिंग प्रोसेस को बा यूरिनेशन को जाउची। ओके, देन कम टू द अल्टरेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशंस। When the some clients will suffer from the urinary problem, that clients is unable to the micturations or urinations, they are feel very discomfort, and for that reasons treatment medications are required. Okay, and persons feels discomfort due to the obstruction of urinary flow, there is have the impact of the bladder function. Okay, and there are the some problems due to the excretory problem. Okay, तो व्यक्ति कौन हो, किसी व्यक्ति कहते तांकर यदि यूरिनरी प्रोब्लेम रोचे बा एक्सक्रेटरी प्रोब्लेम रोचे, से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन रोचे, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाउछि एवं ब्लाडर फंक्शन ठीक रे ब्लाडर ठीक रे फंक्शन करू नहीं, तो से टाइम रे कौन हो ना व्यक्ति डिस्टर्बेंस हो जाउछि एवं से डिस्कम्फर्ट फील करुछि। ओके, तार यूरिन एक्सचेंज ठीक हो पारु नहीं। ओके, तो some conditions are there. First is we will see that urinary retention. In the urinary retention stage, what happen? The person has inability to bladder to the empty. Okay, if there is accumulation of urine in the bladder, but person has inability to the bladder to the empty. यूरिन जदि भी कलेक्शन होकर रोचे यूरिनरी ब्लाडर, किंतु व्यक्ति एम्प्टी करने इन अक्षम हो जाउछि, ताहाको कहते यूरिनरी रिटेंशन। हियर व्हाट हैपन, यूरिन कंटिन्यूअसली कलेक्ट इन द यूरिनरी ब्लाडर, बट इंडिविजुअल हैज incapacity to expel the urine or to remove the urine, to that has inability or that has the person has no capacity to voiding. Okay,
एथिरे गोटे जिनस जानले जे जिते व्यक्ति कौन प्रेसर रोच डिस्कम्फर्ट रोच कि किसी प्रोब्लेम रोच तो व्यक्ति ये समय कौन हो व्यक्ति चाहिए भी कौन हो यूरिन को बाहर कर यूरिनेशन ठीक से कर पारना। ओके देन कम टू द लोअर इंट्राक्ट इन्फेक्शंस। So when in the lower intestinal infection case, there is the bacteria will be spread in the bloodstream. Okay, and the microorganisms and that is bacteria that will be spread over the blood through entire body. Okay, and that also be through blood goes to the kidney, so that through the blood the microorganisms also enter to the kidney, and that causes the urosepsis. Okay. So in the urosepsis case what happened? The urosepsis is a type of species that caused by infection in the urinary tract. Okay, so severe infection occurs in the urinary tract. Okay, when the microorganism through the blood enters to the kidney, that causes the urosepsis, where total urinary tract will be infected. And persons or individuals who have the urinary tract infection, that the persons feels pain and burning sensations, and that burning urinations also do that burning urination known as dysuria. Okay, because there is the tissue will be inflamed, urine flows past inflamed tissue, the tissue that pus cells will be formed. Okay, then come to the urinary incontinence. The persons who have the urinary problem, that persons has incontinency of the involuntary loss of urine. व्यक्ति न चाहिए भी इनवॉल्युंटरी व्यक्ति न चाहिए भी यूरिन कौन हुए कंटिन्यूअसली पास हो जाए। ओके, कंटिन्यूअसली एक्सप्रेशन हो जाए। ओके, यह केवल कौन हो जो व्यक्ति यूरिनरी प्रोब्लेम रोचे यूरिन प्रोब्लेम रोचे से व्यक्ति कौन हुए ना व्यक्ति न चाहिए भी यूरिन कंटिन्यूअसली पास हो जाए एक्सपल्सन कर जाए। ओके, सो इट इज द इनवॉल्युंटरी लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, and there has the leakage of urine. Urine will be leaked and it will be continuous and intermittent. Then come to the urinary diversions. So what is urinary diversion? It is also case it is the altered urinary eliminations. Urinary diversion is a surgical procedure where we create a new way for urine to exist in your body. Okay, when urine flow blocked. So urinary diversion is a surgical procedure. Here we create a new way for removing of the urine. Okay, जिते कौन हो व्यक्तिर कौन व्यक्तिर यूरिन ब्लाडर जो यूरिन कलेक्शन हेल्ले भी यूरिन बाहर को पास्ट हो पारुनी बा एक्सपल्सन हो पारुनी से कौन हुए ना गोटे यूरिनरी डाइवर्जन क्रिएट करा जाए। यूरिन डाइवर्जन गोटे सर्जिकल प्रोसीजर एथरे कौन हुए आब्डोमिन गोटे इंसिजन करा जाए ओपनिंग करा जाए। से ओपनिंग माध्यम कौन हुए ना डाइजेस्ट ट्रैक्ट कि यूरिनरी सिस्टम को कौन हुए ट्यूब कनेक्टेड होइकी कौन हुए यूरिन को कलेक्शन करा जाए। ओके, so it is a surgical process where urine will be exist in our body when urine flow is blocked. urine जो ब्लॉक हो कौन हुए गोटे ओपनिंग करके एब्डोमेन रे कौन हुए ना से यूरिन सिस्टम रु यूरिन कलेक्शन करा जाय थाए। ओके, ये केतले करा जाय थाए ना जितले कैंसर ब्लाडर पोस्टेड ब्लाडर कैंसर देखा जाए कि कैंसर इन द यूरेथ्रा कि ओभारी यूटेरस सर्विक्स भाजन रे देखा जाए कि किसी प्रोब्लेम यूरेथ्रा ओभारी सर्विस भाजन ये देखा जाए से यूरिन डाइवर्जन करा जाए। ओके, जितने कौन हुए ना यूरिनेशन व्यक्ति करें ना यूरिनेशन ब्लॉक हो जाए से यूरिनरी डाइवर्जन करा जाए। इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर व्हेयर
urine will be removed from the body through the opening of the in the abdominal surfaces, okay, and urine will be collected. In the abdominal surface, it will be, that urine will be collected through by the tube that is attached to the urinary system or urinary bladder. ताले यूरिन डाइवर्जन कौन है गोटे एब्डोमिनल गोटे ओपनिंग करिकी कौन है ना यूरिन कलेक्शन करा जाए थ्रू बाय द ट्यूब एंड द पाउच द urostomy pouch or special bag that will be attached that collect urine from the urinary system from the bladder through by the surgical procedure. Instead of inserting the tube with the your bladder, we will create an opening in the abdomen through by the which urine will be collected. So एथरे कौन होची ना abdomen गोटे इंसिजन करी ओपनिंग करिके आम कौन करूँ यूरिन सिस्टम को गोटे ट्यूब इंसर्ट करके से कौन होची यूरिन कलेक्शन करूँ एवं यूरिन गुड़ाक सब आसी कौटी स्टोर रहती ना यूरोस्टोमी पाउच रे सब यूरिन आसिक स्टोर होगी रही था या केतल होता है जो ब्लाडर प्रोस्टेट ब्लाडर कैंसर होता है यूरोथेरा कैंसर होता है ओवरी कैंसर होता है यूटेरस कैंसर होता है सर्विस भाजना कैंसर होता है किंबा ब्लाडर रे किसी रेडिएशन इंजुरी होता है से यूरिन डाइवर्जन करा जाए सर्जिकल प्रोसीजर करा जाए. देन कम टू द अल्टरेशन इन द यूरिनरी एलिमिनेशंस. जिते कौन हुए यूरिनरी प्रोब्लेम देखा जाए यूरिनरी सिस्टम किसी प्रोब्लेम होता है से नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन रे डिस्टोर्शन देखा जाए से किसी अल्टरेशन देखा जाए. ओके so at the time we see some signs and symptoms. So first see that dysuria. Dysuria is the painful voiding. पेनफुल यूरिनेशन जो व्यक्ति यूरिनेशन करुथिबो सेतले पेनफुल पेन फील करिवो व्यक्ति ताको आम से कंडीशन को डिस्यूरिया कहि थाउ. या साधारणतः व्हेन द यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अपर लोअर यूरिन ट्रैक्ट व्हेन द यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस occurs at that time the painful voiding occurs, painful micturition occurs or the painful यूरिनेशन अकर. तो व्यक्ति जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए से डिस्यूरिया ताको हम डिस्यूरिया यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हेले जो व्यक्तिर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए से यूरिनेशन कला समय पेन फील करे से से कंडीशन को व्यक्ति डिस्यूरिया कंडीशन कही था. एथरे बर्निंग सेंसेशन फील होता है यूरिनेशन कला समय पोड़ा जड़ा फील हुए. ओके ये साधारणतः ब्लाडर यूरेथ्रा इन्फेक्शन जो इन्फ्लेमेशन जो होता है. ओके सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज द्वारा मध्य भी यह भी संभव होता है. तो डिस्यूरिया कहले जे पेनफुल भॉइडिंग पेनफुल मिचुरेशन पेनफुल यूरिनेशन कला समय पेन फील होगा डिस्यूरिया कहते. एथरे बर्निंग सेंसेशन व्यक्ति फील करि थाए. देन कम टू द पॉल्यूरिया. व्हेन पर्सन्स formed or extracted excess amount of urine due to the increased fluid intake that condition is polyuria. जिते व्यक्ति कौन हुए फ्लूइड इंटेक जो एक्सेस करुच्ची से कौन हुए ना एक्सेस अमाउंट फ्लूइड एक्सट्रेशन हो जाए फॉर्मेशन होता है ताकू पॉल्यूरिया कंडीशन कहती. एथरे यूरिन आउटपुट 2500 to 3000 ml 24 आवर्स होता है. 24 आवर्स व्यक्ति 2500 ରୁ 3000 ml यूरिन आउटपुट व्यक्तिर 24 आवर व्यक्तिर 2500 ରୁ 3000 ml यूरिन आउटपुट होता है. साधारण डायबिटीज कंडीशन देखा जाता है जदि व्यक्ति कैफीन अल्कोहल यूज कर कंडीशन देखा जाता है. ओलिगोरिया व्हेन द पर्सन्स व्हेन द फॉर्मेशन एक्सट्रेशन ऑफ द डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज द नोन एज द ओलिगोरिया. जिते यूरिन फॉर्मेशन एक्सट्रेशन डिक्रीज हो जाता है. ओके साधारणतः दैट विल बी the formation extra urine less than 500 ml in 24 hours that condition known as oliguria. ताले 500 ml 24 घंटे 500 ml कम यूरिन एक्सट्रेशन बा फॉर्मेशन है ताकू ओलिगुरिया कंडीशन कहती. यह साधारणतः फ्लूइड इंटेक डिक्रीज हो जाए है वोमिटिंग डायरिया कंडीशन रे किंबा स्वेटिंग एक्सेस स्वेटिंग कंडीशन दैट इज नोन डायफोरेसिस कंडीशन रे ब्लीडिंग समय यूरिन आउटपुट साधारणतः कमी जाए है से कंडीशन को आम ओलिगुरिया कही था. नेक्स्ट एनीरिया
when the kidney organs are the not properly functioned, okay, and that not formed or expressed in the urine, okay, that condition known as anuric, that person goes to the anuric, and that condition known as anuria. And here the formation of excessive urine occurs less than 100 ml of urine, that condition known as anuria. Anuria condition किडनी जो फेलुर हो जाए तार organ सब फंक्शन करने को बंद कर दियंती एवं से व्यक्तिर यूरिन एक्सक्रेशन फॉर्मेशन 100 ml कम हो जाए तार कंडीशन anuria कहती. बट देन कम टू द अर्जेंसी. गोटे ब्लाडर स्टोरेज कैपेसिटी केते ना साधारणतः 250 to 400 ml of urine. The normal bladder capacity is the storage the urine about 250 to 400 ml urine. ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁରିନେସନ୍ କରିପାରେନି, ଓକେ. ଅର୍ଜେନ୍ସିର ବ୍ଲାଡର କାପାସିଟି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସେତିକି ୟୁରିନ୍ ରହିଛି 250-400 ୟୁରିନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ୟୁରିନେସନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଅର୍ଜେନ୍ସି କୁହାଯାଏ, ଓକେ. ସାଧାରଣତଃ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ୟୁରିନ୍ ବ୍ଲାଡର କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ବା ୟୁରୋଥେଲାସ୍ ପିଞ୍ଚରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଅର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଓକେ. So urgency, what is urgency? The normal bladder capacity is the storage the urine about 250 to 400 ml of urine, but due to the some incomplete of the urethral sphincter due to the inflammation of the irritation of the bladder, the person is unable to the void. If he has the voluntary, he have desire to the urination, but they can't do, okay. Next, frequency. If the voiding or urination occurs in the frequency in the interval, that is known as the frequency. In the frequent interval, if the voiding occurs, that is known as the frequency. Then come to the noturia. What is the noturia? When the urination occurs in the sleeping stage, that is known as noturia. राति समय शोवा समय यदि व्यक्ति यूरिनेशन कला ताको नोचुरिया कंडीशन कहती. देन कम टू द हेमाचुरिया. When the blood seen in the urine during the urinations, that is known as hematuria, okay. या यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन द्वारा कि यूरिन ट्रैक्ट ट्यूमर देखा गले हेमाचुरिया कंडीशन देखा जाए. नेक्स्ट कम टू द पायरिया. When the urine contains pus, that is known as pyuria. It also occur by the urinary tract infection. Urinary tract infection लो मध्यम pyuria condition देखा जाए. इधर कौन है वो urine रे pus cell बढ़ी थांती एवं urine रे pus देखा जाए ताको pyuria कहती. And then urinary retention. The person has inability to the empty the bladder. If the bladder is stretched by the urine, that means urinary retentions. जितने bladder fullness है लो मध्यम भी व्यक्ति कौन करे ना व्यक्तिर ब्लाडर यूरिन एम्प्टी हो पारे ना ताको रिटेंशन कहती. व्यक्ति ब्लाडर रिलैक्स करने को अनेबल अक्षम अटे एवं एथरे ब्लाडर फुलनेस हेल्ला मध्यम भी व्यक्ति ब्लाडर यूरिन पास हो पारे ना ताको रिटेंशन कहती. तो आम जदि ये प्रोब्लेम देखा ताले व्यक्तिर फिजिकल असेसमेंट करि थाउ. वी डू द फिजिकल असेसमेंट. सो फर्स्ट विल असेस द टेम्परेचर, पल्स, वेट ऑफ द पर्सन्स, एंड आल्सो द वी सी द स्किन इंटीग्रिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, हाउ इज प्रेजेंट द स्किन इलास्टिसिटी, okay. That is will be the normal or the abnormal stage. The color and peripheral edema also be observable, okay. Abdominal, pelvis, genital tract, rectum also be examined. In the diagnostic test, first the person goes to the urinary lysis stage, okay. In the urinary stage, the person will be observed. The person will be remain in the observable conditions. We observe the nurse or the doctor observe the specific gravity. What is the specific gravity present in the urine? What is the osmolality of the urine? Urine pH value, proteinuria, glycosides, leukocytes stage. All are the will be detected and will be observed. So in the diagnostic stage, person undergoes the urine lysis. तो diagnostic stage व्यक्तिर urine lysis करा जाए. इधर urine specific gravity, osmolarity, pH value, proteinuria, glycosides इत्यादि देखा जाता है. तो इधर urine culture करा जाए, ओके. एवं यूरिन साइटोलॉजी करा जाए.
सॉरी यूरिन कल्चर करा जाए, यूरिन साइटोलॉजी करा जाए, देखा जाए तो एथे abnormal यूरिन रही कि नहीं, कौन को पॉज फॉर्मेशन होई कि नहीं ऐसे देखा जाए। एंड यूरिनटा क्लीयरेंस अच्छी कि नहीं देखा जाए, ता कनसेंट्रेशन केते रही, ब्लड यूरिया BUN लेवल केते रही, सीरम क्रिएटिनिन लेवल केते रही, एक्सरे मध्य करा जाए, किडनी ब्लाडर यूरेटर करा जाए। ओके एंड इंटरवेनेंस पाइलोग्राफी करा जाए, जो थे कि आम किडनी रेनाल पेल्विस को भल भाव में देखी होता है। आउट एक्सप्लोरेटरी यूरोग्राफी मध्य करा जाए, एथरे कौन ना किडनी यूरोटस ब्लाडर को भल भाव में देखी होता है। सो इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन हुए ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट द पर्सन अंडरगोज यूरिन एनालिसिस, हियर वी चेक द यूरिन कल्चर, यूरिन साइटोलॉजी, that is the urine pus cells, urine amount, and also we observe the concentration of the urine, also we observed blood urea nitrogen level of the urine, blood serum creatinine level, urine pH value, osmolarity, and also do the X-ray study of the kidney, ureter, bladder, and also we do in the diagnostic study intravenous pyelography. Here we visualize the renal pelvis of a kidney, and in the exploratory urography we observed the blood vessels, observed the kidney, ureter, and bladder. Also do the renal angiography. In the renal angiography we see the blood vessels, what are the blood vessel proper functioned or not. Then CT scan, MRI we used to, magnetic resonance image also do, and CT scan madhyam kara jai thai. Then come to the nursing diagnosis. In the nursing diagnosis also we observed the person's body image disturbances, how persons feels, thinks, what are the thought of the person, that will be observed. And the persons are the incontinence stress or not, that also be observed, and incontinence urge also be observed. And what are the self-care deficit of the persons, that will be find. And will find out the impaired skin integrity, if the skin levels is elastic skin is proper or not, that will be also detectable. And there has the altered elimination or not, that also be detectable. And urinary retentions is present not, that also be detectable. And देन कम टू द इम्प्लिमेंटेशन। ताले नर्सिंग डायग्नोसिस कौन जिते आम देखा जे व्यक्तिर कौन रोचे, व्यक्तिर इनकंटिनेंस स्ट्रेस रोचे कि नहीं, इनकंटिनेंस अर्ज अच्छी कि नहीं, सेल्फ केयर से प्रॉपर केयर तार नहीं पार्छ कि नहीं, तार स्किन लेवलटा ठीक इलास्टिक स्किनटा ठीक अच्छी कि नहीं। कारण व्यक्तिर जो डायरिया कि स्वेटिंग मध्यम जो व्यक्तिर अधिक वाटर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए, जो व्यक्तिर कौन हुए ना फ्लूइड लॉस हुए और से इलास्टिसिटीटा स्किन जी रहा कथा से साधारणतः आम जो पिंच करके स्किनटा को उठे था से स्किनटा ठीक नॉर्मल गोटे स्किनटा जो पिंच कर उठे था से तार नॉर्मल बा प्रीवियस स्टेज को चली जाए था, किंतु जो बॉडी रू वाटर लॉस हो जाए से प्रीवियस स्टेज को जावाई बहुत टी समय लगी था। तो से स्किन इंटीग्रिटी ठीक अच्छे ना देखा, यूरिनरी एलिमिनेशन कौन सब अल्ट्रेशन अच्छी देखा, डिसुरिया हो एनीरिया हो कौन स्टेज रही, यूरिनरी रिटेंशन अच्छी कि नहीं सब देखी था जानवा को पड़ी था। ओके देन कम टू द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। द पर्सन्स हु आर अंडरगो द urinary problem, we first will be discuss about the health promotion of the persons. Always instruct the patient to participate in the self care practice, ओके दैट विल प्रोटेक्ट द हेल्थ यूरिनरी सिस्टम फंक्शन। जिते व्यक्तिर यूरिनरी प्रोब्लेम रोचे ताकू आम हेल्थ केयर प्रैक्टिस पार्टिसिपेट करने इंस्ट्रक्शन दवा उचित, जो व्यक्ति हेल्थ केयर प्रैक्टिस जदि पार्टिसिपेट कला तार निजर से केयर नेला और तार हेल्थ लेवलटा धीरे धीरे बढ़ी इनक्रीज हो। देन क्लाइंट एजुकेशन, वी प्रोवाइड द एजुकेशंस लाइक द स्पेसिफिक एलिमिनेशन नीड्स, problems, what are the problems that will be what the problems arises due to the if you do not maintain the proper eliminations। यदि proper elimination व्यक्ति ठीक रे न मेंटेन करे कौन प्रोब्लेम रही किभली भाव में स्पेसिफिक एलिमिनेशन करिवो, किभली भाव पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे ता विषय आम क्लाइंट को एजुकेशन दवा। and always maintain the normal urinary eliminations, that will be prevent the urinary incontinence, urinary burning sensations or urination problem।
जदि आम प्रॉपर कौन करा नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन मेंटेन करवा ताहले यूरिनेशन प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर परिबा तो भल भाव यूरिनरी प्रॉब्लम जहाँ भी रोचे ताकू आम अवॉइड कर परिबा। देन स्टिमुलेटिंग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स साधारण साइकोलॉजिकल फैक्टर यूरिनेशन उपर इफेक्ट पकाउछ जदि आम से साइकोलॉजी फैक्टर को कंट्रोल कर परिबा we also try to increase our desire to avoiding if any psychological events comes to our mind that will be reflects the maturation साइकोलॉजी पर जहाँ पढ़ुची ताकू आम कंट्रोल करिकी थिंकिंग जहाँ भी आसू आम साधारण कौन कथा भाविकी मेचुरेशन यूरिनेशन कर पार नथाऊ तो जहाँ भी आसू ताकू आम अवॉइड करिकी आम ठीक रे जदि यूरिनेशन कर पारिबा ताहले यूरिनेशन करबा ट्राई करबा ताहले से रिफ्लेक्सटा अफेक्ट करिवो रिसेप्टर सेल को ताहले एलिमिनेशन ठीक रही थाए। ओके इबे यूरिथ्रल स्पिंचर ओपन हुए आउ यूरिनटा पास हुए होई थाए। देन इफ यू मेंटेन द प्रॉपर एलिमिनेशन हैबिट ओके इन डेली रूटीन्स then the glands elimination habit also increases and glands will be curable. Okay, and if you take the adequate fluid then the elimination patterns also increases. If the persons who are do not take proper do not take adequate fluid proper way that person's fluid will be lost so that urine output also will decrease. So we take the adequate if you take the adequate fluid then that will be the ureteral balance also maintains and the fluid also maintains and excess urine also be flushes out solids particles and also be waste product also be removed. Then also be if the persons who are unknown about the bladder emptying and that will provide the training complete bladder emptying training will be provided and by which the person's bladder will be remains in the proper stage that will be not influenced by the any injury any burning sensations etc. Because the bladder also through by bladder the voiding occurs and the urine will be eliminated as after the urinary sphincter close. Okay, urinary sphincter close हल्ला पर कौन हुए ना voiding होता है. Okay, and किसी amount रो urine कौन हुए से तरह रह जाता है तेणु proper bladder emptying कले कौन हुए ना से तरह urine रही बने कि urine रही कि किसी disease condition को create करी बने. Okay. Preventing infection if you do the personal hygiene like cleansing the urethral meatus after voiding and bowel movement then it will prevent the infections. Do you know that in the moist conditions some bacteria also be grows. Okay, if the urethral meatus will be not washed properly through by the water or through by the properly not maintain the proper hygiene then the bacteria will grow and infection causes that will be causes the burning sensations and persons not proper voiding. तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने पे एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस को भल भाव धोइबा यूरिनेशन कला पर हो कि बाल मूवमेंट पर हो. देन एसिडिफाइंग यूरिन we know that urine is slightly acidic in nature. Okay, and that way that has power or capacity to inhibit the growth of the microorganism. Okay, and it provides the privacy of patient for elimination. So यूरिन जेहेतु एसिडिक नेचर अच्छी एथेर कौन बैक्टेरिया सहज ग्रोथ हो न था जदि कौन जदि फ्लूइड जदि कमीगला ताहले से माइक्रो धीरे धीरे ग्रोथ होने बर्निंग सेंसेशन पेशेंट फील करता है. ओके, तेणु से आम कौन कह माइक्रोजन ग्रोथ को कम हेल्ले एक्सेस वाटर पीवा एवं ए मीट्स एग्स होल ग्रेन ब्रीड बा प्लम्स इत्यादि खाଇବା ता कहीं एगुड़ा यूरिन एसिडिटी को बढ़ाई था. मीट्स हो एग्स हो होल ग्रेन ब्रेड्स हो एटा सब कौन कहती ना यूरिन एसिडिटी पावर बढ़ाई था. तेणु सब यूरिन को एसिडिफाई कर रखा चेष्टा करवा एंड स्ट्रेंथनिंग पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करवा वी डू द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवा कहीं जिते आम
ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନ୍ଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟପ୍କୁ ସେଇ ଷ୍ଟପ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଓକେ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ କରାଇବା ଓକେ ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ କରାଇବା କରାଇଦେଲେ କ'ଣ ନା ତା'ର ୟୁରିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ତାହା ସେଇ ଷ୍ଟପ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିକି ୟୁରିନ୍ଟାକୁ ପାସ୍ away କରି ହୋଇଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ଫର୍ଟ. The persons who have the urethra will be infected and the persons feel the burning sensation or discomfort. The warm sitz bath will be provided for the relieving of the pain. Okay, and give them much amount of water to drink that prevent the toxicity. Okay, okay, and to maintain the optimal flow through the urinary system. So provide comfort to the patient or promotion of comfort.